Welcome back to Droanacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 19th July 2022. वेल इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में कुछ 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले विल टॉक अबाउट ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल BACC। विल अंडरस्टैंड ये काउंसिल क्या है। Then we'll talk about Juvenile Justice Boards. So there's a new guideline that has been released for Juvenile Justice Boards that we'll cover here. And then we'll discuss initiatives for mainstreaming of millets. And then our last article is important from health point of view. It is about Kala Azar. So let's begin with this video. So हमारा पहला आर्टिकल ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल. This is important from Indian economy point of view. Now we need to understand कि ये ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल ये न्यूज़ में कैसे आई है. रिसेंटली देयर इज दिस इंडस्ट्री बॉडी जो कि टॉप इंटरनेट कंपनीज को टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को रिप्रेजेंट करती है, विच इज द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया. They have dissolved a key unit set up 4 years ago, and that was to do public advocacy for cryptocurrency, blockchain sector, and citing the regulatory uncertainty. And from there the blockchain and crypto assets council came into news. तो सबसे पहले समझते हैं what is this. So the blockchain and crypto assets council ये बेसिकली एक अम्ब्रेला एंटिटी है जिसमें सभी क्रिप्टो और जो ब्लॉकचेन कंपनीज हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, बेसिकली टू लेज विद द गवर्नमेंट. इनका एम है कि इंडिया के अंदर जो इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री है ये उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कॉइन स्विच कुबर हो, वजीर एक्स हो, कॉइन DCX हो, जेप पे, बिट BNS, all of these crypto industries in India. So they are represented by the BACC, Blockchain and Crypto Assets Council. And they basically they represent Indian crypto industry players to advocate the crypto industry's arguments to regulatory bodies जैसे कि आरबीआई को लेकर जो भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ द क्रिप्टो करेंसी एंड एवरीथिंग, तो उसे लेकर अपने आर्ग्यूमेंट्स कौन प्रेजेंट करता है. इट इज डन बाय द ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल. अब कोड ऑफ कंडक्ट ये है, देखो इन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें जितने भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं दे हैव टू फॉलो, which are likely to be updated ताकि कोई भी रन इन्स ना हो सके विद द रेगुलेटर्स. तो इसे लेकर लगातार जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स फॉलो करते हैं. नाउ देयर आर सम इश्यूज टू दिस. एक तो इंडिया की जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है इसे एक बहुत बड़ा ब्लो मिला, विच हैज़ बीन हिट बाय द स्टिफ टैक्स नाउ, एंड जो पेमेंट प्रोसेसर्स हैं दे कटिंग ऑफ देयर एक्सचेंजेस. जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है क्रिप्टोज की वो क्रैश हो चुकी है, एंड देयर इज अ ग्लोबल बियर मार्केट राइट नाउ. तो एक तो इंडिया की क्रिप्टो करेंसी को भी यहाँ पे जो हाई टैक्सेस इसके ऊपर लगे हैं उसका हिट लगा है. देन ऑल्सो देयर इज दिस अनसर्टिनिटी. अब ये जो एसोसिएशन है दे कैन रियलाइज दिस टाइम जो भी उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं in terms of the other digital sectors as well, and they can make more immediate and direct contribution to digital India. They can deepen up the financial inclusion, and they can promote RBI's central bank issued digital currency. तो क्योंकि अब क्रिप्टो को लेकर जो अनसर्टेनिटी है इस टाइम पीरियड के बीच में जो आरबीआई की डिजिटल करेंसी आ रही है जो डिजिटल इंडिया के अंदर वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. देन RBI has taken a view that all these private cryptocurrencies they basically are threat to monetary stability of a country. तो एक चीज जो ये जो काउंसिल है जो डील करती है दैट इज विद द स्पेकुलेशन दैट इससे मॉनेटरी इंस्टेबिलिटी आएगी, ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी को थ्रेटन अप करती है. एंड नाउ द प्रपोजल इज टू डिसमेंटल द ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल. दिस इज अंडर कंसिडरेशन बिकॉज एज वी आर सीइंग कि लगातार जो क्रिप्टो प्लेयर्स हैं इनके ऊपर जो नॉर्म्स है वो टाइटन अप होते जा रहे हैं. गवर्नमेंट इज टाइटनिंग अप देयर नॉर्म्स. तो
दिस इज स्टैंड व्हिच इज टेकन बाय द आरबीआई, काफी ज्यादा टैक्सेस लग चुके हैं क्रिप्टो के ऊपर. देयर इज वन प्रपोजल व्हिच आल्सो कॉल्स फॉर डिसमेंटलिंग ऑफ द ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल. यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का क्रिप्टो लीडर है सेल्सियस नेटवर्क. दे हैव फ्रोजन द विड्रॉल्स लास्ट मंथ एंड दे हैव फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी इन न्यूयॉर्क. तो ये एक लेटेस्ट केस बन चुका है. दे आर द लेटेस्ट विक्टिम ऑफ द क्रिप्टो विंटर. So these are all issues that are going on with respect to the cryptocurrency and all these blockchain assets. So here we need to know about RBI and the digital currency. We know this, हमने इसे पहले भी कवर किया है. RBI हमारा जो डिजिटल करेंसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसे एक्सप्लोर कर रहा है, विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. So now RBI exploring this distributed ledger technology which will be based on the central bank digital currency. इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो भी डिटेल्स हैं उनको मल्टीपल प्लेसेस पे रिकॉर्ड किया जाएगा एट द सेम टाइम. अब डिफरेंस ये है कि जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो ब्लॉकचेन इज जस्ट वन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये भी सेम ही चीज के ऊपर काम करेगी, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. एंड ये बात ऑलरेडी आ चुकी है कि जो सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये लीगल टेंडर होगा. इट कैन बी कन्वर्टेड एंड एक्सचेंज एट पार विद ऑल दी सिमिलर डोमेटेड कैश. तो इंडिया के अंदर सीबीडीसी हमारी खुद की डिजिटल करेंसी होगी विच विल बी इशूड बाय आरबीआई एंड इट इज एक्सप्लोरिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. It is the same one which blockchain uses. Moving ahead. Our next article is important from paper 2. It's about juvenile justice boards. Recently, juvenile justice board को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं. अब ये जो टॉपिक है ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट है, तो इस टॉपिक को मेनली हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी हमारी नेशनल और स्टेट चाइल्ड राइट बॉडीज हैं इन सबको गाइडलाइंस इशू की हैं टू फैसिलिटेट द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इन मेकिंग देयर प्रीलिमिनरी असेसमेंट एज वेल. ये इसलिए किया गया है ताकि ये देखा जा सके कि ऑल दोज चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 16 years एज एंड अबव दे कैन बी ट्राइड एज एन अडल्ट फॉर एन हीनियस ऑफेंस. To check this, कि क्या ऐसा हो रहा है. So for that, Juvenile Justice Board has been given some guidelines. Now, to understand this better, we should know that what is the law when it comes to trying a juvenile as an adult. हमारे पास यहाँ पे जो एक्ट आता है that is JJ Act, Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act. JJ एक्ट बोल देते हैं. इसका सेक्शन 15 ये कहता है that if there is a children of 16 years of age or above, they have committed a heinous offense, the Juvenile Justice Board is required to conduct a preliminary assessment before taking the decision that whether the child needs to be tried as an adult or not. समझ में आया कि अगर हीनियस ऑफेंस का केस है तो वैसे में ऐसा चाइल्ड जो कि 16 years ऑफ एज एंड अबव है तो उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड प्रीलिमिनरी असेसमेंट करेगा एंड दे विल डिसाइड दैट चाइल्ड हैज टू बी ट्राइड एज एन अडल्ट और नॉट. और वो कैसे डिसाइड करेगा? इसके लिए जो बच्चा है उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी को देखा जाएगा जो उन्होंने ऑफेंस क्रिएट किया है, कमिट किया है. देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑफेंस, the circumstances in which he allegedly committed the offense. तो ये हीनियस ऑफेंसेस के केस में आता है. हीनियस ऑफेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे ऑफेंसेस जहां पे मिनिमम पनिशमेंट जो होती है वो 7 years होती है. ऐसे ऑफेंसेस को कहा जाता है हीनियस ऑफेंसेस. तो हीनियस ऑफेंसेस के केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिमिनरी असेसमेंट कि 16 years और अबव एज का अगर चाइल्ड है उसका ट्रायल किस तरह होगा एज एन अडल्ट और नॉट. एंड उसके लिए उनकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी को चेक किया जाएगा.
क्या जो ऑफेंस उन्होंने कमिट किया है इसका कॉन्सिक्वेंस उनको पता है या नहीं, वो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसमें ये ऑफेंस कमिट किया गया है। एंड टाइम पीरियड जो असेसमेंट के लिए दिया जाएगा, दिस वुड बी 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड बिफोर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। 3 months के बीच बीच में ये असेसमेंट की जाएगी। सो व्हाट हैपन्स व्हेन अ जुवेनाइल इज ऑर्डर्ड टू बी ट्रीटेड एज एन अडल्ट? अब यहाँ पे हमारा जो अमेंडेड एक्ट है, एज पर द सेक्शन 19, the court can pass the decision on whether there is a need for trial of a child as an adult or otherwise. अगर तो कहा कि नहीं एज एन अडल्ट नहीं होगा, तो ऐसे केस में जो आपका चिल्ड्रन कोर्ट है वहां पे केस ट्रांसफर हो जाता है। जो चिल्ड्रन कोर्ट है दे हैज टू इंश्योर कि वो बच्चा जो कि इन कॉन्फ्लिक्ट में है, दे विल बी सेंट टू द प्लेस ऑफ सेफ्टी until they reach the age of 21 years. 21 years तक उनको प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजा जाता है। Only after that they are transferred to jail. The court can also order the conditional release of the child after he or she attains the age of 21. यहाँ पे दो important protections हैं जो कि child को नहीं मिलती, those who have been treated as an adult. Protection from disqualification and erasure of conviction record after reasonable period. ये अवेलेबल नहीं है ऐसे बच्चे के लिए जो कि अडल्ट के तौर पे जिसको ट्राइड किया गया है। If the child has been tried as an adult, the sentence can go up to life imprisonment. But if the child is tried by the board as a juvenile, the maximum sentence can be of 3 years in a special home. This is the difference. अगर एज एन अडल्ट होगा तो सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है, लेकिन एज अ जुवेनाइल अगर जुवेनाइल बोर्ड में चाइल्ड के तौर पे ट्रीट किया गया है तो मैक्सिमम सेंटेंस सिर्फ 3 years का होता है, दैट टू इन अ स्पेशल होम। नाउ हियर हमें जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में भी पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी हॉट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो अमेंडमेंट बिल आया है इसमें सबसे पहले तो जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन्हें एम्पावर किया जा रहा है। इट ऑथराइजेज द डीएम इंक्लूडिंग द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू इशू अडॉप्शन ऑर्डर्स अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द जेजे एक्ट, so that there is speedy disposal of the cases, and इससे जो ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी है वो एनहांस हो पाए। And this district magistrate have been further empowered to ensure that there is smooth implementation as well as garner synergized efforts in the favor of the children in distressed conditions. Also, any child care institution shall be registered after considering the recommendations of the district magistrate. जो डीएम है वो इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करेंगे इन सभी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स को, जो भी चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हैं या फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब की इंडिपेंडेंट जो इवैल्यूएशन है वो डीएम के थ्रू की जाएगी। एंड एनी ऑफ दीज चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस shall be registered after considering the recommendation of district magistrate. तो यहाँ पे अगर हम ये सभी पॉइंट्स देखें, वी कैन क्लियरली सी दैट this amendment bill is empowering district magistrate in this case. Also, we need to know about the child welfare committees. अब जो eligibility parameters हैं जिनके थ्रू जो हमारे चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज के मेंबर्स अपॉइंट होते हैं उनको भी रीडिफाइन कर दिया गया है। देयर इज दिस क्राइटेरिया फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज मेंबर, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि इससे ये इंश्योर हो सके सिर्फ वो पर्सन जो कि केपेबल हैं अपनी इस तरह की क्वालिटी सर्विस देने के लिए, सिर्फ वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में अपॉइंट हो। इससे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जो कॉम्पिटेंस है, जो इंटेग्रिटी है, वो मेंटेन रहेगी। प्रेजेंटली हमारे पास जो ऑफेंसेस हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं एज पर दिस एक्ट: पेटी, सीरियस एंड हीनियस, which are defined under this act, and they are referred to while considering the case of the child in conflict with the law. However, it was observed that
some of the offenses do not strictly fall under any of these categories. It has been decided that offenses where maximum sentence is more than 7 years of imprisonment, but there is no minimum sentence, they have been prescribed, or the minimum sentence of fewer than 7 years is provided, that would be treated as the serious offense within this act. तो यहाँ पे मेनली जो 7 years इम्प्रिजनमेंट की बात है, अगर इससे ज़्यादा आपके पास ऑफेंस आता है तो वो हीनियस बन जाता है, बट इफ इट इज़ लेस देन 7 years देन इट इज़ एन सीरियस ऑफेंस. Then lastly, JJ Act 2015, Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 के बारे में आपको पता होना चाहिए. 2015 में इसे पार्लियामेंट में पास किया गया था एंड इट रिप्लेस्ड जुवेनाइल डिक्लेंसी लॉ एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000. इट रिप्लेस्ड इट और 2015 में ये एक्ट आता है. इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन है उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाएँ. दिस इज रेटिफाइड बाय इंडिया ऑन December 11, 1992. द यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के थ्रू पूरा करते हैं. इट अलाउज द ट्रायल ऑफ जुवेनाइल्स who are in conflict with the law in the age group of 16 to 18 years as an adult. So in cases where crime were to be determined. अब जो नेचर ऑफ क्राइम है, बच्चा जो है जुवेनाइल जो है उसे एज अ माइनर एज अ चाइल्ड ट्रीट किया जाएगा कि नहीं, दिस इज डिटरमाइंड बाय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. दिस एक्ट हैज ऑल्सो स्ट्रीमलाइंड अडॉप्शन प्रोसीजर फॉर ऑर्फन्स हु आर अबैंडन्ड और द सरेंडर्ड चिल्ड्रन. इस एक्ट के थ्रू इंडिया में फॉस्टर केयर इंट्रोड्यूस किया गया था. आगे बढ़ते हैं. इसके और प्रोविजंस अगर हम देखें तो जो एग्जिस्टिंग हमारा जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, दिस हैज बीन गिवन द स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेटस. इससे उनका जो फंक्शन है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिवली हो पाता है. द लॉ हैज ऑल्सो मेड द प्रोविजन दैट वाइल अडॉप्टिंग अ चाइल्ड, प्रायोरिटी इज गिवन टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन, physically and financially incapable children. There is also special provision that has been made to tackle child offenders who are committing the heinous offenses in the age group of 16 to 18 years. And Juvenile Justice Board is given the option to transfer the cases of heinous offenses by such children to a children's court after conducting the preliminary assessment that we just discussed in this particular article. Next we have is millets, initiatives for mainstreaming of millets. Why this is in news? Because recently Niti Aayog and World Food Program India, they will launch the Mapping and Exchange of Good Practices initiative so that we can mainstream millets in Asia and Africa. Very important. So they will basically prepare a compendium of good practices जिससे कि मिलेट्स की प्रोडक्शन और जो कंजम्पशन है इंडिया में भी और अब्रॉड भी हम उसे इंक्रीज कर पाएं. सो फॉर दिस नीति आयोग एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया हैज लॉन्च्ड मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस. And this initiative will ultimately mainstream the millets in Asia and Africa. मिलेट्स के बारे में जान लेते हैं. मिलेट्स एक बहुत ही कॉमन टर्म है जिसमें जो भी स्मॉल सीडेड ग्रासेस होते हैं, जिनको न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है, ड्राई लैंड सीरियल्स, जिसमें सोरगम, पर्ल मिलेट, रागी, स्मॉल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, ये सब इंक्लूड हो जाता है. One of the characteristic feature of the millets are that they are very hard and they are drought resistant crops. And also that millets can grow in poor soil conditions with less water, less fertilizer, and with less pesticides as well. They can also withstand the higher temperature, and therefore they are the perfect choice as the climate smart cereals. If we talk about the global distribution of millets, so India, Nigeria, China,
These three countries are the largest producer of millets in the world, and they basically account for 55% of the global production. For many years, India was the major producer of millets, but however, the millet production in Africa has increased dramatically. In India, pearl millet is the fourth most widely cultivated food crop after rice, wheat, and maize. याद रखिएगा, pearl millet is the fourth most widely cultivated crop after rice, wheat, and maize, and millets are available almost all across the India. There are top five states: Rajasthan, Karnataka, Maharashtra, UP, Haryana, where you see the millet crops. There's so many benefits of millets as well. Millets can help in tackling all the health challenges like obesity, diabetes, lifestyle problems because they are gluten free. And they also have very low glycemic index, and they are high in dietary fibers and antioxidants. Millets are nutri cereals. They have very high nutritious value. They include proteins, essential fatty acids, dietary fibers, vitamin B, minerals, calcium, iron, zinc, potassium, magnesium. All of these are present in the millets. They can provide nutritional security. They can protect us against nutritional deficiency, especially the children and women. They are also very critical for climate change, especially in dry lands, because they are important for smallholders and marginal farmers. But then there are some concerns as well. The concerns that arise from millets. See, first of all, the awareness of these benefits of millets are very low. This is the reason why there is very less number of players who are working on the value addition of millet products in India. And the main reason behind the decline are low remuneration. There is lack of input subsidies, lack of price incentives, the subsidized supply of fine cereals through public distribution system, and there is change in the consumer preferences and lower demand. Because of these lower demand, it also means that there's limited supply and higher prices. So in the absence of proper market linkages for forest and agricultural produce, millet consumption is restricted only to the rural hearths, bazaars, tourist spots, and festivals. So, what are the government efforts basically to promote the millet production? See, millets are promoted through technology dissemination. There are quality seeds through millet seed hubs. There is awareness generation. There is minimum MSP as well. There is also inclusion of millets in PDS also. Efforts are now being done to include the nutrient-rich smaller millets in midday meal scheme as well, in the government and government-aided schools of Karnataka and Telangana. So now even the millet awareness is catching up very fast in urban centers like Kolkata, Mumbai, and Delhi, and so many others. Also, Union Agriculture Ministry in April 2018 declared millets as the nutri cereals, considering their high nutritional value and also that they have anti-diabetic properties. 2018 was observed as the National Year of Millets, and now United Nations General Assembly has adopted India's sponsored resolution to mark year 2023 as the International Year of Millets. तो 2018 में हमारा नेशनल ईयर था मिलेट्स का, और फिर इंडिया ने स्पॉन्सर किया इस रेजोल्यूशन को, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने जो 2023 ईयर है इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कर दिया है. Also, government of India has this Millet Mission, which comes under National Food Security Mission. This was launched in October 2007. And this government's Millet Mission basically focuses on farm gate processing, and it empowers the farmers through collectives while focusing on the value addition and the aggregation of the produce. And this initiative of sharing the good practices will go a long way. Moving ahead, our next article is about Kala Azar. This is important from health point of view. So according to reports, 11 districts of Bengal
have reported at least 65 cases of black fever or Kala Azar in the last couple of weeks. So, from here, Kala Azar becomes important. It is basically a very slow progressing indigenous disease. It is caused by a protozoan parasite which belongs to genus Leishmania. Kala Azar, which is also called as Leishmaniasis, this is one of the dangerous, fever, a dangerously neglected tropical disease, which is endemic in 76 countries. And because of this, approximately 200 million people are at the risk of the infection. There are three main forms of leishmaniasis. One is visceral, which is also known as Kala Azar, and this is the most serious form of the disease. Second one is cutaneous, which in which basically the skin is affected, and the third one is mucocutaneous. If you talk about the transmission, the Leishmania parasite, they're transmitted through the bite of infected female, phlebomotile sand flies, which basically feed on blood to produce eggs. There are some 70 animal species, including human. Those have been found as the natural reservoir host of the Leishmania parasite. This disease impact mostly, some of the poorest people, and it is mostly associated with malnutrition, population displacement, poor housing condition, a weak immune system, and lack of financial resources. Leishmaniasis can also be linked to environmental changes, deforestation, building of dams, irrigation scheme, urbanization. With all of these factors, we see that there is increase in incidences of the diseases like these. The prevention and control of leishmaniasis basically require the combination of intervention strategy. It is a treatable and curable disease. It requires an immunocompetent system because medicines will not get rid of the parasite from the body. So the risk of relapse is more if there is immunosuppression. Effective diseases surveillance is important, in which you need to monitor the activity and also act during the epidemic and situations of high case fatality rates under treatment. So that was all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you so much.